बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। वो लेवल्स और IGCSE लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन शेयर करते हैं आपसे। वन एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज -2, 3 and its midpoint is at 3, 1. Find the coordinates of the point at the other end. अब देखिए कि यहाँ पर एक लाइन है, उसके दो एंड पॉइंट आपको गिवन है। इसको लेट कर लेते हैं कि ये ए है और इसको हम बी दे देते हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कह रहा है कि दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करें। तो मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला कि जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हम x1 y1 x2 y2 कहते हैं। ये x1 y1 है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, x2 y2। अच्छा, अब ये -2 3 जो है कह रहा है कि मिड पॉइंट इज 3, 1, यानी कि इस लाइन का आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट को अगर मैं 3 से शो कर दूं तो ये आपको 3, 1। लेक्चर 3 आपसे डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ओ लेवल्स और IGCSE लेवल के क्वेश्चन जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एक एंड पॉइंट आपको दिया हुआ है -2, 3। दूसरा एंड पॉइंट हमें फाइंड करना है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए। तो मैंने क्या कहा था कि जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं इनको हम x1 y1 और x2 y2 कहते हैं। तो बी दूसरा एंड पॉइंट है, x2 y2 फाइंड करना है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई से शो करें। बात याद रहे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम किससे शो करते हैं, एक्स वाई से। एंडिंग पॉइंट्स क्या है, x1 y1 x2 y2। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्दर आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड। तो अब आइए हम पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x आपको कितना दिया हुआ है 3, x1 आपको कितना दिया हुआ है -2, x2 हमें फाइंड करना है। ये हो गया 2 3 6, 2 3 6, ये -2 इधर आ गया, +2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया 8। अब हम देखें y आपको दिया हुआ है 1, y1 आपको दिया 3, y2 हमें फाइंड करना है। ये हो गया 2 1 2, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, +3 इधर आता -3 हो जाएगा। सो दिस इज हियर द वैल्यू ऑफ y2 इज -1। सो द another end point of this line segment B, which we have supposed that x2 y2 is 8, -1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेक्चर 3 में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, लेक्चर 3 हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो लेवल्स और IGCSE लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। Another very important question here, find an equation of a line which passes through the point -4, -6 and perpendicular to the line having the gradient -3/2। अब यहाँ पर दो लाइन्स की बात है। We have two lines here, one in which passes through this point which is the required line, and this line is perpendicular to another line having the gradient -3, 2। तो अब आइए देखिए, हम इसको डायग्राम से बता देते हैं आपको। ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 है। ओके, एंड दिस इज L1। L1 का आपको एक पॉइंट दिया हुआ, कहीं पे भी ले ले, उससे कोई मसला नहीं है। -4, कहीं पे भी ले लें L1। और L2 का आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने बात क्या कही थी कि इक्वेशन फाइंड करनी है, तो जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसी लाइन का ग्रेडियंट होना चाहिए और उसी लाइन का
y इंटरसेप्ट होना चाहिए या पॉइंट होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, ओके, अगर मैं इसको m1 कह दूं ग्रेडियंट 1 और इसको मैं m2 कह देता हूं ग्रेडियंट 2, तो जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इसी लाइन का ग्रेडियंट होना चाहिए, इसी लाइन का पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो फॉर परपेंडिकुलर लाइन हमने आपको ये बात बताई थी, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस the product of the gradient will be equals to -1 when the lines are perpendicular. जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 की इक्वल होता है। तो मुझे m1 चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो m2 क्या है मेरे पास, -3/2। ये हो गया मेरे पास m1 -1, 2/-3, minus cancel. So this is the gradient of the required line, which is passes to the point this -6, -4, 6. तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रहेगा, लेक्चर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अब आइए, हमारे पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें m तो मिल गया है, c चाहिए, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो y आपको दिया हुआ है -6, ग्रेडियंट आप निकाल चुके हो, x आपको दिया हुआ है और ये प्लस c हो गया। तो ये हो गया -8/3 प्लस c, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 8/3 c, 6 3 18 प्लस 8/3 c -10/3 c। तो आप देख रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, वो लेवल्स और IGCSE लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ये मेरे पास आ गया, सी आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ y is equals to mx plus c. So what is the m, which is the gradient? Here we have to use m1 right now because we have two gradient here. Number one, the value of c is -10/3. This is the required answer of this coordinate geometry question. Okay, students, now come to the next question here. Okay, students, another very interesting question related to again the coordinate geometry topic is going on for O levels IGCSE students, and lecture 3 we are going to discuss right now. Okay, now come to the question here. P is the point 1, -3, and Q is another point is 7, 2. Find the coordinates of the midpoint of a PQ. Okay, coordinate find करने midpoint के. Find the gradient of the line PQ. We have to find out the gradient of the line PQ. And number 6, C part, the line L, equation 2x minus 5y is equals to k, passes through the point Q. Find the value of k. And then the line x plus ay is equals to 3 is parallel to the L. Find the vertex A. तो अब आइए स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अब आइए हम इसके ए पार्ट की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स आपको गिवन हैं। पी जो है ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, -3, क्यू आपको दिया हुआ है 7. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको जहन में रहे। हमने क्या कहा था, मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आइए इसको हम यहीं पे कह देते हैं, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज हियर। Now come to the part A. X is equals to, we have to find out the midpoint. This is x1, y1, x2, y2. So x1 plus x2, 1 plus 7 over 2. So 7 plus 1 is 8/2. 4s are 8. So x is equals to 4. Similarly, the coordinate of y here, y1 plus y2, y1 plus y2. y1 is -3,
y2 is 2 divided by 2. So this is minus 1 of 2. So the dear students, the midpoint of the PQ is x comma y. That is 4 comma minus 1. 2. Coordinate geometry, lecture 3, O levels, IGCSE students. Very important question. Part A we are going to discuss right now. Now come to the part B. Find the gradient of PQ. ओके स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे चलते हैं. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू. मैंने पी क्यू भी लिख दिया आपके आसानी के लिए. तो फिर फार्मूला दिस इज से x1 y1, this is say x2 y2. So the what is the formula for the gradient? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So here y2 minus y1 2 minus 3, x2 minus x1 7 minus 1. So minus minus plus 2 3 2 plus 3 5 7 minus 1 is 6. So this is the gradient here. This is the gradient. Now come to the another point C here. C पे चलते हैं. Okay students, 2x minus 5y is equals to k passes through the point Q. Find the coordinates of k. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, Q आपको दिया हुआ है 7,2. अब मैंने क्या कहा था कि when a line passes through any equation, then that point will satisfy the equation. That means we can put the value of x is equals to 7 and value of y is 2 and in this equation, because this equation passes through the point Q. So therefore we can put the value of x and y here to find out the value of k. So this is another important question, a very interesting question in coordinate geometry. So this is 2x minus 5 and this is y is equals to k. 2 7s are 14, 5 2s are 10, k, this is 4. So the value of k is 4. Here the value of k is 4. Now come to the another second part in the C part, which is a very interesting of this whole question. Okay students, now come to the part C of the second part. Question says the line x plus ay is equals to 3 is parallel to the line L. अब देखिए students, the line L is 2x minus 5y is equals to k. But we have to find out the value of k. So this line will be 2x minus 5y is equals to 4. Because the value of k is 4, we have to find out the same part in the same question in the coordinate geometry. Now, this line is parallel to this line. And we have discussed when two lines are parallel, then their gradients will be equal to each other. So we will use this definition here. Now come to this line. We have to find out the gradient of this line. Then we will find out the gradient of the L line, and since these are parallel to each other, so they will be equal. We will find out the value of A. Now here plus x, we have to shift to the right hand side. Minus 1 upon A and 3 upon A. So this is the gradient here of this line. Now come to this line. 2x minus 5 equals to 4. Minus 5y, we have to shift to the right hand side. We have to subtract y to find out the gradient here. So this is 2 over 5x minus 4 over 5. And this is the gradient. When we have to subtract y, then the coefficient of x will be the gradient. Now, for parallel lines, we are going to use this symbol here. This symbol represents the parallelity of two lines. For parallel lines, their gradient will be equal to each other. That means minus 1 over a should be equals to 2 over 5. So this is minus 5 is equals to 2a. So the value of a is minus 5 over 2. The very interesting question of the coordinate geometry we have completed here. Now come to the another interesting question. Okay students, lecture 3 में coordinate geometry में another
question we are going to discuss with you right now. Find the equation of a perpendicular bisector of a line segment joining this point. Now here we have to find out the perpendicular bisector. Perpendicular bisector means number one, passes through the midpoint, and number two, perpendicular. So that is called the perpendicular bisector. If we suppose that this is say P and this is say Q, now this is a line segment here, P and Q, and this is the midpoint here. Now this is the perpendicular bisector, passes through the midpoint of the line segment PQ and perpendicular on it. This line is called perpendicular bisector, and if this line we have to find out the equation. So here we don't have any gradient of this line or any point of this line to find out the equation. So for perpendicular bisector, we have to use this definition here to find out their point and the gradient. Now, number one, say this is M. Here, M is the midpoint of PQ. M is the midpoint of PQ. So we have to use here M be the midpoint of PQ. So therefore, M is equals to, this is x1, y1, x2, y2. So midpoint is x1 plus x2 divided by y1 plus y2 divided by. So just we have to use this result here. And x1, y1 minus 1 plus 9 over 2. xy1 plus y2. Okay. Now 8 over 4, 14 over 2, and this is, 2, 4s are 8, 2 7s are 14. So the coordinates of M is 4, 7. 4, 7. Now, half problem is solved. The equation perpendicular bisector, we have to find out its point M is now we have to find out. Now we have to meet the gradient. So first we have to find out the gradient of PQ, and then we use the perpendicularity condition to find out the gradient of the required line. हमारा काम हो जाएगा इसमें, and we are able to find out the equation of this line. Now this is say the gradient of PQ. This is say M1. Okay, इसको हम M1 कह देते हैं. Formula is y2 minus y1 x2 minus x1. यहाँ मेंशन कर दें gradient of PQ ताकि याद रहे कि M1 is the gradient of PQ because we are going to face two different gradients here. 12 minus 2 y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is here. Ten minus minus plus over 10. So M1 is 1. For perpendicular line, this is the symbol for perpendicular lines. Now M1, M2 will be equals to minus 1. M2 is the gradient of the required line. So the gradient of M1 is 1. M2 is minus 1. So the gradient of the required line is M2 minus 1. Now the perpendicular bisector also passes through the point this, that was we have to find out here, 4, 7. Now we required the equation perpendicular bisector. Now we have the gradient, the point. So we have y is equals to mx plus c. So y is 7, m is minus 1, x is 4 plus c. We have to find out c here. So this is minus 4. We have to shift here. 11 हो जाएगा. This is the c.
नाउ y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c and m is -1 and c we have to find out 11. So this is the required equation of perpendicular bisector of the given line segment. Dear students, coordinate geometry lecture 3 we have discussed some questions with you. Inshallah we will do some more questions. If you like this video, please share it and subscribe my channel. मैं तो यासिर अरफात, आप प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए। वो लेवल्स की ये तमाम वीडियोस आपको सीक्वेंस के साथ वहां से मिलती जाएंगी। वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।